नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ 2021 चार्ट्स पे चर्चा विद आनंद एंड विजय। मैं हूं विजय सिम्हा। आज हमारे साथ आनंद नहीं है, कुछ फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी हुई है, सो आई विल बी टेकिंग यू थ्रू द चर्चा फॉर दिस वीक। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स मूव टू द इंडिसेस। निफ्टी में जैसे लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था की लेवल्स, और बात हुई थी कि वो की लेवल्स के ऊपर नीचे का एक्शन हमें वॉच करना चाहिए इस हफ्ते के लिए। सो द रैली कंटिन्यूस। अगर आपने गौर किया है तो नोटिस किया होगा कि हर दिन 100 पॉइंट के आसपास ओवरनाइट का मूव मिल जाता है, एंड द इंडिसेस हैव बिकम वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड। अगर सिंपल टर्म्स में देखा जाए, निफ्टी, दिस इज द मंथली चार्ट where earlier I had labeled 1, 2, 3, 4 and 5, but looking at the strength of the market and overall breadth of the market, अगर आप individual निफ्टी 100 या निफ्टी 500 इंडिसेस को भी आप देखोगे तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये 1, 2 और एक और बहुत बड़े लेवल का 1, 2 सब डिवाइड हो रहा हो, एंड दिस इज लाइक third of third, and this entire vertical move makes me wonder if this is a very large level wave 3 opening for the Indian stock markets. ये I think हमें एक alternate view रखना चाहिए mind में, so we should not be in a hurry to get bearish. However, when we go down to the lower time frames, which is the daily chart, it is possible that 1, 2, 3, 4 and 5th is coming to an end. Now, whether it will end at 14,000 or whether it will go to 14,600, it is anybody's guess. But till the trend reverses, we should not try to short this market. ये जो बहुत बड़ा fall हुआ था, this was the biggest fall in a long time, 650 points का था approximately. But उसके बावजूद ये strong uptrend continues. I think whenever this key level breaks, that could be a very good indication that we have topped out. So till that point, I will reserve my judgment on the index. अब चलते हैं बैंक निफ्टी। ये है बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट। अगेन द डीप मार्च करेक्शन, और जैसे मैंने शायद पहले भी किसी एपिसोड में कवर किया था कि निफ्टी ने मार्च के एंड में बॉटम किया था, बट बैंक निफ्टी एक्चुअली बॉटम 2 months later, at the end of May. Keeping that in mind, we should assume that there is a lot more steam left in Bank Nifty on the upside. निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाई के ऊपर एक और हाई बना दिया है, बट बैंक निफ्टी में अभी भी जान बाकी है। और अगर इंटरनल वेव काउंट भी देखा जाए इस बॉटम से, तो आई थिंक we've just finished 1 and 2, and probably we've finished 3 here. I'm not too sure. डेली स्केल में भी अगर देखा जाए तो ये थर्ड वेव के अंदर का वेव काउंट तो पूरा दिख रहा है। whether this is fourth or maybe the 3 finished here and the 4th is yet to happen, it's all very difficult to guess. But staying with the trend, any dips on Bank Nifty to the 20-day moving average, which is around 30,570, so अगर 30,600 के आसपास अगर डिप मिलता है, I think we should go long, and this may also make a new high before the market gives any serious dip. So let's keep an eye on this level of 20-day moving average of 30,570 on Bank Nifty, and look for options which are maybe a few hundred points away.
This is all I have to say about the indices for this week. I'm not a volume expansion expert like Anand, so I will, leave the volume expansion bit to him. I am only looking at, Elliott wave possibilities for now. However, there are some stocks which can give some very interesting moves this week. Axis Bank. ये एक्सिस बैंक का डेली चार्ट है. मार्च बॉटम से अगर देखा जाए तो एक वेव 1 यहाँ शायद खत्म हो गया है, एंड दिस इज ऑल ए एंड बी. बी वाज एन एक्सपेंडेड फ्लैट, स्लाइटली ए के ऊपर गया है, लेवल वेव 1 के ऊपर. दैट इज ऑल राइट. एंड सी यहाँ पे खत्म हुआ है, सो वेव 2 यहाँ पे खत्म हुआ है. उसके बाद से ये 1 2 3, probably this is a fourth रूल ऑफ ऑल्टरनेशन. बोलते हैं कि वेव 2 अगर शैलो होता है तो वेव 4 कॉम्प्लेक्स या डीप होता है. सो वी आर in the fifth wave of this particular up move of wave 3. So a simple pitchfork मैंने बनाया है. Again, the price is very much above the 40-day and 20-day moving average, which are at 606 and 613. So we can easily look at, say, the 630 call of January expiry. I think currently it is trading around 24-25 rupees. अगर उस rate में मिलता है तो we can buy it with a stop loss of 20. This is a trade that I'm personally looking at, and we can easily reach, somewhere here, which could be, maybe 700 kind of levels by the end of this month. It's very much possible. So we should definitely look at this. The other trade that I have in mind is Indiabull Housing Finance. इसको अगर देखा जाए, this is a weekly scale chart. ये बड़े करेक्शन के बाद अभी ये बॉटम हो गया नहीं हुआ, that debate is useless. However, even if we look at it as a simple corrective bounce, so it's a A and this is a B. So C has some way to go. At least 310 तो दिखाएगा. Daily chart अगर देखा जाए, again, the stock is comfortably trading above 20-day moving average and also 40-day moving average. It has been trading above the 20-day moving average for 1 2 3 4 5 over a week. So that's a very positive sign. Again, here we could look at the 240 call, जो ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से सिर्फ 1-2% की दूरी पर है. वो 14 रुपए पे ट्रेड कर रहा है approximately. With a stop loss of 11 or 10, I wouldn't mind taking a bet. 240 250 तो आना ही है, and we have a long month ahead of us. I wouldn't even be surprised if it rallies all the way to 300 plus. So this is a very good trade, I think. Going back to the indices, I wanted to say something which I noticed. निफ्टी को देखते हैं. अगर हम इतने सालों का चार्ट अगर देखते हैं, एक चीज, एक रिपीटेटिव पैटर्न है ऑलमोस्ट. At least a medium term to long term tops are typically done in the first quarter of the year. अगर नवंबर के आसपास टॉप नहीं आया, मतलब दिवाली के आसपास टॉप नहीं आया, तो it generally gets postponed to the next quarter. So let's take a look at the monthly chart. ये जो 2008 का टॉप था, ये 31st जनवरी को आया था. So January is when it topped. Next टॉप भी अगर देखा जाए, again at the same level 6357, ये नवंबर में आया था. उसके बाद नेक्स्ट टॉप यहाँ से ब्रेकआउट कर गया, बट अगेन इफ यू सी द नेक्स्ट टॉप इज अगेन इन February, राइट. सो एक करेक्शन जरूर मिला उसके बाद, काफी डीप करेक्शन था ये करेक्शन और ये करेक्शन काफी डीप थे दोनों. एंड अगेन इफ यू सी
a major top occurred, here. कि काफी लोगों को टेस्ट किया था इसने, but ultimately the big top happened in January, again January of 2020, right? So इस साल में यहाँ पे एक करेक्शन शुरू हुआ था सितंबर के आसपास, but that was required. So this is going on. So I think we should look at end of January or end of February as the next probable time frame for the top first quarter, basically Jan, Feb, March. Looking at the past data, we could even look at Bank Nifty to see if it is true. Right, Bank Nifty का first top देखिए January, second top November, it coincides with what Nifty was showing. This was a aberration. Bank Nifty doesn't follow exactly Nifty's pattern. So यहाँ पे May में एक top हुआ था. But again, the big top here happened in January. Another January top. Right. And again, the big one, 2020, January. So this clearly tells us that there's no point shorting this market at the moment. At the risk of missing, a short-term dip, we may as well wait for this January, February months to play out. हो सकता है January end में हमें कुछ sell signal मिले. Till then, let's wait it out. I think अभी के लिए इतना ही है. As soon as Anand is back, we will try and spot some more opportunities for everyone, and we may come up with a midweek update. Till then, take care. Please respect risk. Please don't forget to subscribe to our Telegram channel, and feel free to throw any questions at us on Twitter or as comments under this video. Thank you.